my name is Neetu Sharma and welcome back to my channel once again. This is the class for spoken English student, and the first day when we take our start class, this is the one where we actually start with the introduction. Okay, we teach you how to do an introduction, which can be different for different students. Alright, so what is introduction, right? Whenever we meet somebody, we have to introduce ourselves, we have to tell about ourselves. People, they always ask, tell me something about, or maybe for interview, they ask the first question, tell me something about yourself. Okay, तो जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम अपने आप के बारे में बताते हैं इंट्रोडक्शन, तो वहाँ हमारे को अपने एक छोटा सा एक इंट्रो देना, जहाँ पे it should be short and sweet and crispy, so that we can know about you. We can have an idea where you're coming from, who are there in your family, where you belong to, what's your qualification, do you have work experience or not. That's it. This is what we want to know about you. So ये एक छोटा सा एक introduction होता है. Whenever we talk about introduction, the first thing I always say, you have to start with the greetings, right? And greetings, and that too with a smile on your face. Why? Because when you smile, you actually show your personality is very happy and it becomes positive, and people definitely like a smiling face rather than a sad face or boring face. So always keep a smile on your face, which actually boosts your confidence also, right? So पहली चीज जो हम लोग करते हैं, we always smile and then we introduce ourselves with a greeting. Good morning everyone, hello everyone, the way you want to greet. Next is the first line आप जो हम पहले बोलते हैं, and that is our name. We have to tell about ourselves. So the first thing is our name. Good morning everyone, my name is Neetu Sharma. Okay, तो हमने अपना पहले नाम बता दिया. Second thing, अब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, which place you belong to, यानी यहाँ जहाँ आप born and brought up हो, कहाँ पे आप पहले बड़े हो, वो जगह क्या है. So the second is the place where you belong to. You can say I belong to देहरादून. मैं कहाँ के से आई हूँ, मैं देहरादून से आई. मैं born and brought up मेरा कहाँ से, देहरादून से. I'll say I'm from देहरादून. Okay. Next आपका आता है family background. फैमिली बैकग्राउंड में आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी फैमिली कितनी बड़ी है. And when I'm saying about family, I don't want to know about your खानदान. I just want to know the family. तो अभी recently आप जिनके साथ रह रहे हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, maybe you are from Bihar or from Banaras or wherever the place it is, when you have settled here for job or whatever, and you're staying here with your wife and your children, you will only say, I have a nuclear family. What kind of a family you have? I have a nuclear family. It can be a joint family or it can be a nuclear family. So when there are only 2-3, you, your wife and your children, then you will say, I have a nuclear family. Next, how many members are there in your family? There are 3 members in my family. ठीक है? जैसे उनमें ज़्यादा भी हो सकते हैं. Accordingly you can change. वो हम आपको, जैसे मैंने आपको लिखवाया ही है, वो आप वैसे ही बोलोगे. This is only I'm trying to explain how you have to do it in your introduction. So there are 3 members in my family, me, my husband and my daughter. Okay? Next, अब आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो. अगर बहुत सारे जने हैं तो बस जस्ट थोड़ा बहुत बता दीजिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. लाइक अगर आपके ब्रदर या कोई है वहाँ पे जॉब पे है, मैरिड है, नहीं है, वर्क है, कौन सी कंपनी में करते हैं, थोड़ा बहुत आप उनको आइडिया. ठीक. So like yes, I have 3 members in my family. It's a nuclear family. There are 3 members in my family: me, my husband, and my daughter. My husband is working in a government job in BSNL, and my daughter, she's studying. Apart from that, उनके बारे में आप बता सकते हो थोड़ा सा और भी ज़्यादा. कहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो. उसके बाद में आप ये बता सकते हैं. अब ये फैमिली के बारे में हो गया. देन कम्स योर क्वालिफिकेशन. अब लाइक मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आई हैव डन माई स्कूल फ्रॉम सेंट जॉन्स. आई डिड माई ग्रेजुएशन, माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम Bihar यूनिवर्सिटी, and my BA. I have done my मतलब जो भी आपने और भी कर रखा है, लाइक MBA, BA, BA,
whatever the courses you have done, you can tell that. उसमें आप add on कर सकते हो उसके बाद में. And from whatever university you have done, like I have done my graduation from Gurwal University. I did my post graduation from Gurwal University, and then I did my BA, my masters in business administration. चाहो तो आप बस यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो एंड दैट्स इट. ज़्यादा बताने का नहीं. उसके बाद आप ये बता सकते हो कि आप ये क्वालिफिकेशन हो गया. देन योर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी. नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप एंड दैट्स ऑल इन योर introduction. But if you have got an experience, like I have an experience of more than 15 years, and I have worked in school as a teacher, and also I have done a lot of things. So आपको अगर बताना है तो डेफिनेटली अगर आपने स्टार्ट ही किया होगा या कुछ ईयर्स हुए होंगे तो yes, I have an experience of so many years in this particular school as a teacher or coordinator or whatever. That is all you have to tell about it, and that's it. And then you will say thank you. That's all about me. Thank you. And that's the end of your introduction. बेसिकली आप अपने बारे में इस तरीके से पॉइंट वाइज बनाते हैं, एक बना के, और आपको बोलना होता है. जब भी आप बोल रहे होते हैं थ्रू आउट द टाइम यू आर स्पीकिंग, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर स्माइलिंग. माई स्माइल शुड बी देयर इन योर फेस. ज़्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए. आपको बहुत नहीं अटकना नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस करिए आप. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है. And that's all about your introduction. It's very, very important. So keep practicing, and I'll be doing this with you every day. So see you there in the class. Bye.